camera and please give your talk on research innovation. Okay. Am I audible, madam? Gulshan sir is with us. Am I audible, madam? Hello? 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 Am I audible, madam? Uh, Hello? Hello sir. Am I audible, madam? Sir, you are audible to all of us. Okay, thank you. Yes sir. So, good morning to one and all in this FDP. And thank you for a very warm reception. So, let me share my screen first, then we will start our proceeding today. Uh, Kindly confirm that my screen is visible. Kindly confirm. Sir, your screen is visible. Okay, thank you, madam. So, okay, okay. So, Yes sir, your screen is visible sir. okay, thank you, ma'am. So, I feel it a very interesting opportunity to be a part of this 1 week faculty development program on a very nice topic, how to prepare SSR and AQR for NAC. So in this session of day 4 of this FDP, we will acquaint of an important criterion of SSR, that is self-study report for NAC grading process, which is criteria 3, research, innovation and extension. So in this criterion, research and innovation parameters are directly linked to the faculty of higher education institutes, and extension is somewhat more or less is related to the students of the college. So as we know that NAC accreditation and assessment protocol is a self-evaluation strategy, in my opinion, for the assessment of quality of a higher education institute in many aspects, be it education, research, community, or college itself. So this self-evaluation is then superimposed with certain ideal benchmarks in the respective aspect to find a score. And that score basically motivates the institutes to work for the achievement of quality in the next assessment block years. So in my perspective also, all this is not meant to just bring a feel of competitiveness amongst the higher education institutes, but all this has a great vision of bringing Indian higher education system to a global recognition. So with this particular brief introduction, I would like to start this. So let us have a look on the criterion 3 of SSR. Criterion 3, research, innovation and extension. So this one. So this is the basic outlook of SSR, your self-study report. So self-study report has 5 components. First is executive summary, second is profile of institution, and third is extended profile of institution. So these first 3 parameters are basically the compiled report of what we have done in our 5 years of assessment period. Fourth is your quality indicatory framework, which is basically the actual part of this SSR,
where we will describe what we have done and what we have planned for the next 5 years or in the last 5 years, what we have done in the last 5 years. And fifth is your data template and the document, which is a part of quantitative matrices. So basically, this template is there to provide the supporting documents for the DVV process, which is one of the important part of NAC grading process now, because it contributes near about 70% score of that particular NAC grading. So, quality indicator framework QIF is represented by 7 criteria. This much of information that we have up to now, and these criteria possess matrices with key indicators. So there are different key indicators in each criteria, and in the matrices there are matrices in the key indicators, and there are two types of matrices in all those key indicators. One is your qualitative matrices and second is quantitative matrices. So qualitative matrices is those type of information that we need to provide in our SSR, but we don't need to provide one supporting document during the DVV process. But the supporting documents are important when the peer team is on visit in peer team view. And the quantitative matrices are those type of matrices where we need to provide the supporting document for whatever we have done for the NAC grading process. So this is the tabulated information criteria with the respective weightages for the affiliated colleges. So we can see criterion 3, research, innovation and extension bears 110 weightage for UG college and 120 weightage for PG college. So now we will look on the matrices. So criterion 3, research, innovation and extension, total weightage 120 for PG college. So there are 5 indicators, 5 main parts of criterion 3 for one affiliated college, either for a PG college. So key indicator 3.1, resource mobilization for research with a weightage of 15. 3.2, innovation ecosystem with a weightage of 10. 3.3, research publication and awards with a weightage of 25. 3.4, extension activities with weightage of 50, and 3.5, collaboration with weightage of 20. So here the maximum weightage is acquired by the key indicator 3.4, which is a measure which is directly linked to the students. So as NAC says that every activity in one college or higher educational institute should be student centric. So that is why the here weightage is given, higher weightage in this particular criterion is supplied to extension activities. So this is also one important part. I hope okay, you must be aware of this optional matrices before we start with the main part. So sometime during the preparation of SSR, there are many questions in the matrices of various criterias where the situations are not in the hand of the affiliated colleges. It means that we cannot do something for the achievement of that particular target that is there in the SSR. So in criterion 3 also, we have in case of PG colleges 5 questions, 5 matrices where the questions are somewhat not in the hand of the staff or faculty members or in the college for the achievement of this particular task. So here question 3.1, quantitative matrices, we need to provide a supporting document for this particular matrices. Percentage of teachers recognized as research guide.
As we know that in case of affiliated college, it is a very tough task to be a research guide. So it turns a very difficult question to answer then. So this time NAC has provided us a very good platform that we can opt out some questions up to, I hope it is 10%. So in those cases, sometimes we can opt out these type of questions where we can't do anything. So here first question is percentage of teachers recognized as a research guide. This is the first question that we can opt out. It is there in the optional matrices. Similarly, 3.2.2, it is also one quantitative question here. Number of workshops, seminar conducted on research methodology, intellectual property rights and entrepreneurship during the last 5 years. Here, this question cannot be, it is there in the optional matrices, but it is not mandatory, or it is still possible for a college to achieve this 5 weightage by performing these type of workshops or seminars. So again also 3.3.1 quantitative matrices, number of PhD registered per eligible teacher during the last 5 years. Here also we don't find one significant digit for that particular benchmark in order to get that particular this weightage, that is there 5. So here also this question is also very good option in case of optional matrices. And this one 3.4. So next two questions are for the next part of criterion 3, which will be dealt by Madam Jeanette of our college. So I hope she will tell you about the next questions. So this is key indicator 3.1, resource mobilization for research. So this particular key indicator generally demands from the college that how much funds college has received for the inculcation of research. So this question is directly linked to the faculty of the college, what the faculty of college is doing in the field of research. So it turns the responsibility of a faculty of college to get the grants. So, and here also the important part is the grant can be received from the government and the non-government bodies. So total weightage of this question is 3, and it is a quantitative matrix. We need a supporting document, whatever projects we have received in our college. So in case of grant for this, in case of answer of this question, what we need grant. So grant either can be received from the government or from the non-government, but for getting a grant from the government is not in our hand, because as you can see, I hope you all will be aware of this situation, that few I hope 2 or 3 years ago UGC sanctioned minor projects. So UGC sanctioned minor projects, but till date the sanctioned money of those projects have not been received by the principal investigator or the colleges. So that is one limitation to answer this particular question. But on the other hand, there is one opportunity in this question: non-government resources. So non-government resources sources, your industrial collaborators, corporate houses, international bodies, or endowment chairs. So this is one area where we can target on to get the fund in order to get this particular weightage. Because I hope, I personally feel that benchmark for this particular weightage will not be that much high. It it means that the grant received for this particular question should not be in the 100 lakhs. It will be 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, I hope, or maximum 10 lakh. So it is not that much difficult to get 1 or 2 lakh grant for a research project from the industrial collaborator, because your college location is in one industrial area of Haryana. So it can be feasible that you can get the industrial grant for the research.
So this is a quantitative matrices. We require a 5-year data, and this is the information that is sought in the data for the SSR. So name of project is compulsory, name of principal investigator is compulsory, department of principal of investigator is compulsory, year of award, fund provided, and duration of project. And what is that document that is required is e-copies of grant award letters for the research projects. So the pro forma is available in the data template. So these are the few government funding agencies, because I said it is easy to find government agencies, but it is tough to get the fund from the government agencies. And it is tough to find non-government agencies, but it is not that much tough to get fund from the non-government agencies for research. So you will be able to see that most of the funding agencies are basically providing fund to the science projects, but most of them are also providing the fund for commerce and the social sciences research projects. And you can see UGC is the parent funding agency that can provide fund for the research projects. Question number 2. 3.1.2 quantitative matrices. We need a supporting document. Total weightage of this question is 5. So this question was there in the optional matrices. If somehow if we have some teachers which are acting as a research guide, then this question is answerable. Otherwise, maximum chances of this question is there to be surrendered. That is why this question is there in the optional matrices. Here also, this is the formula: number of teachers recognized as research guide divided by total number of full-time teachers into 100. So I hope the benchmark for this particular question will be near about 10% of the teachers. So achievement of a 10% 10% for this particular weightage, I think is a very tough task, because for being a research guide for a affiliated teacher, for the teachers of affiliated college is a tough thing to get on. So that is why this question is in optional matrices for the college teachers, affiliated college teachers, either it may be a UG or PG college. Matrices number 3.1.3. It is also one quantitative matrices. We require a supporting document with a weightage of 5 here. Percentage of departments having research projects funded by government and non-government agencies during the last 5 years. So first question was about the grant, and this question is about the number. See how many number of projects are there. So here also this question, this matrices is also one feasible task that can be done with the help of government and non-government agencies from the funds from the projects of non-government and non-government agencies. So this requires only number. This is one important key indicator 3.2 innovation ecosystem. Total weightage of this particular key indicator is 10. So there are two questions. One is 3.2.1, which is qualitative. We don't need any supporting document, but we need to carry those supporting documents during the peer team visit. And second question is quantitative matrices 3.2.2. The first question is institution has created an ecosystem for innovation and has initiative for creation and transfer of knowledge. So basically this question deals with what type of setup that we have created in our college to provide some sort of innovation environment in the college.
So in AQR, this question basically is related with the development of incubation centers and the startups. What type of incubation centers we are setting, or what type of startups we have set up in our college for making our students market friendly or the job ready. So if this question is answerable only then when we have started any incubation center in our college, or we have some sort of startups in our college. For example, that in our college we have one startup here of that startup is basically dealing with the production of compost. So in our college we have set up a one me compost plant where the student can learn how to start a compost plant and get the vermicompost. So that type of initiatives can also be started in the colleges to answer this particular question. So similarly, question 3.2.2, number of workshops, seminars conducted on research methodology, intellectual property rights, and entrepreneurship during the last 5 years. So this question is directly linked to the current scenario where the maximum encouragement of the student is towards either research or towards the entrepreneurship. So this question is basically about the conduction of workshops, seminars on research methodology, intellectual property rights, and entrepreneurship. And you might be able to see that from the last year, the organization of these type of workshops and seminars has increased because now people are getting aware of the NAC requirement about the type of workshop that is counted for the NAC scoring. Research publications and award. So here question 3.3.1, it is of quantitative matrices with a weightage of 5. So here also this question is somewhat difficult to answer for a teacher of one affiliated college, because in affiliated colleges we don't have that purview that we can be a supervisor, a principal supervisor of a PhD student. We can be a co-supervisor. So this question can also be answered, but here this thing can be answered with the help of collaboration. If you have collaboration with the universities or private universities or any institute that generally carries out PhD programs, then only this question is answerable. Otherwise, it is a bit difficult. So collaboration is one option where we can achieve some weightage in this particular question, because in the collaboration only we will be able to act as a research guide. So collaboration is a very important part. That is why it has been given a weightage of 20 in this criterion. And this one. So this is directly linked to the faculty of affiliated college. Matrices 3.3.2 quantitative with a weightage of 10. So here it is dealing with the research papers per teacher. Okay, how many research papers we have in our college with individual teacher in the journals notified on UGC website. You can see I have made it red because it is one compulsory requirement that whatever research paper we have with us in this assessment period, it should be notified on UGC website. You all are aware that UGC have notified a list of journals
where it requires or it asks that you must have your research paper in these notified journals. So it turns the responsibility of IUPAC team that it encourages or tell about this particular requirement of NAC accreditation to the faculty member that they must publish their research, whatever they are doing, in a limited area of affiliated college. I hope, because it is very tough that we have some research environment in one affiliated college, because we don't have that type of infrastructure. But still, as teachers don't take anything lightly, they keep on doing research by anyhow. So they need to provide they need to publish their research in UGC notified journals. So this list is available on the website of UGC. And one more thing, I also request that the IPSC team of the college must go for one workshop or training program to get every faculty of the college registered on the UGC website of listed journals, because it requires one account by which any faculty member can see how which particular journal is listed in this particular UGC list. Earlier it was in form of a list, but now it is in form of an account. You need to open one account, and by entering through that account, we will be able to see those particular journals that are listed in UGC. For sciences, it is easy. We need one Scopus or a Web of Science enlisting. So in case of sciences, it is easy, but in case of social sciences and commerce, it is bit tough. So we need to visit this particular website for the regular updation of the journals which is there in the list of UGC. So this is also one quantitative matrices. We require a very brief very each and every data: title of paper, name of author, department of teacher, name of journal, year of publication, and ISBN or ISSN number. So these are the requirements. And this one. So this is the favorite area of teachers: number of books and chapters in the edited volumes, book published or paper published, and paper published in national and international conference proceedings. So this is also turns the responsibility of IUKC team of that college, that they should encourage the faculty members to go for those national or international conferences where the proceeding is published with ISSN number or ISBN number. Otherwise, that particular attendance or paper published will not be counted for the weightages in case of NAC accreditation. So it turns the responsibility of NAC team, IUKC team, sorry, to make the faculty members aware that they should publish their research in conferences with proceeding and proceedings with ISSN number or ISBN number. So this is also one quantitative matrices. So we require the authentic data and authentic proof for this particular weightage of 10. So the next part, it is a key indicator 3.4 extension activities, and this particular key indicator and the next one will be dealt by my colleague, Madam Jeenat Madan. So that's all from my side. If you have any query, kindly. Yes, Gulshan. Hello. Good morning. Good morning. Because this is a very weak point in our college. Yeah. Research. तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़े ऐसे पॉइंट्स बता दो जिससे हमें नंबर मिल जाए.
नंबर का तो मैम मैंने आपको बताया कि नंबर की वो हर एक फाइन डिटेल नहीं यहाँ नहीं, some जी नहीं, दैट इज ओके। हम कुछ ऐसे की इंडिकेटर वेयर वी कैन वर्क। हाँ Okay, जी सर sorry, Gulshan, let me answer, इसमें ना एक दो मुझे वो अपनी शेयर करना जो तूने 3.3 समथिंग 1 था, एक इंक्यूबेशन सेंटर का जो था पॉइंट था, उसमें इनको थोड़ा सा आइडिया दे दो कि दे कैन क्रिएट ए रिसर्च सेल इन द कॉलेज, यस सर ठीक है। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी छोटा जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट या कोई भी ले सकते हैं, लैब टू लैंड टाइप का रिसर्च, जैसे कोई सैम्पलिंग टेस्टिंग है, वाटर टेस्टिंग है, ठीक है, इस तरह के प्रोजेक्ट छोटे छोटे भी कर सकते हैं, एनएसएस के थ्रू भी करा सकते हैं। यस सर Then they can organize the workshops and seminars for the students also, because ecosystem is something which is not really very clearly demarcated. यदि मैंने एक बच्चे को स्टार्टअप की तरफ लेके जाना है तो इट इज नॉट नेसेसरी को स्टार्टअप शो करना हमने, बट वी हैव टू जनरेट अ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब है कि हमने उन बच्चों का शुरू में, जैसे कोई स्टार्टअप से पहले हमने उनको बच्चों को वर्कशॉप कंडक्ट करनी है, एक सेमिनार करना है उन बच्चों का, ठीक है, जैसे हैकाथॉन वगैरह ये कंप्यूटर वाले करते रहते हैं, उनकी कोई आपस में कंपटीशन कराना है, ठीक है, जो जो हम लोग कराते हैं सारा, उस तरह से भी वो दैट आल्सो इज ए पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, बिकॉज टू रीच अप टू स्टार्टअप और उस लेवल तक तो एक थोड़ा सा हायर लेवल हो गया है, ठीक है, बट इकोसिस्टम वी कैन जनरेट, क्योंकि हम बहुत से कॉलेजेस इस तरह की एक्टिविटीज करते रहते हैं। और एक रिसर्च सेल वगैरह वो तो हम कर ही सकते हैं गाइड करने के लिए, बच्चों के प्रोजेक्ट्स वर्क के लिए या कुछ बच्चों का इस तरह से एक्टिविटी के लिए, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, ठीक है ना जी सर। हाँ, वो इनको थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं उसमें पॉइंट ऐड करके। ओके जी सर। तो बेसिकली Thank you very much, sir. दैट हाँ, और भी कोई क्वेश्चन? हाँ, और इस क्वेश्चन में लगता है कोलैबोरेशन में थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा मोटिवेट करें, बिकॉज यू मस्ट हैव द कोलैबोरेशन इन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि उसके बिना कोई बात बननी नहीं है। आप तो बिल्कुल ही एक बार जरूर ध्यान रखें कि यदि आपने कोई छोटा सा काम भी करना है, जैसे अब आप लोग 2 इंस्टीट्यूट मिलके कोई काम कर रहे हैं, दिस इज ए कोलैबोरेशन, ठीक है। आप तो बहुत से कोर्सेज, बहुत सी चीजें शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ द नॉलेज। आपका टीचर एक एक्स कॉलेज का टीचर वाई कॉलेज के अंदर जा सकता है, वो इस तरह की कोलैबोरेशन भी आप कर सकते हैं। और वो मैं ये सोचता हूँ कि एक ही सिटी के अंदर इट इज मच मच ईजियर। चलो खैर, अब ऑनलाइन की वजह से तो सारे कॉलेजेस के अंदर हम ये चीजें कर सकते हैं। इवन आप एक छोटा सा कोर्स डिजाइन कर सकते हैं, मान लो एसडी कॉलेज ने कोर्स डिजाइन किया है, हम आपके बच्चों को वो शेयर कर सकते हैं, बच्चों के साथ कर सकते हैं, आपका कोई टीचर हमारा, दैट इज अ कोलैबोरेशन। ये सारी चीजें इसके अंदर काउंट होती है क्योंकि नेक का एक ही एम है कि we should collaborate with each other and should share our expertization of the colleges, not only in with regard to the teachers, with regard to the students also। तो मैं ये सोचता हूँ कि हमें हर चीज के अंदर कोलैबोरेट। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपके एक कॉलेज ने एक लेक्चर कराया है हेल्थ इश्यूज के ऊपर फॉर द स्टूडेंट्स, ओके, गर्ल्स कॉलेज ने कराया, तो व्हाई कांट इट इज एप्लीकेबल टू द खालसा कॉलेज आल्सो? उसके लिए भी हो सकता है वो सेम चीज, वो उनके बच्चों के लिए भी कर दो, कंबाइंड कर दो, दोनों ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कर लो, तो वो और भी बढ़िया हो जाएगा। आप ऐसे कर लिए कि हमने साल में 10 चीजों को ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करना है, तो वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसके आपने कोई मैक्स हॉस्पिटल से या कहीं से भी कोई अच्छा डॉक्टर बुलाया है बच्चों की हेल्थ इश्यू के लिए, उस पर डिस्कस करने के लिए, और वुमेन सेल ऑफ बोथ द कॉलेज दोनों मिलके भी वो लेक्चर करा सकते हैं, वो कोलैबोरेशन होगी है। यही चीजें तो है, छोटी छोटी चीजें जिसे हमने आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करना है तो कोलैबोरेशन के जो 20 वेटेज है उसके अंदर काफी यूजफुल होता है। फिर बाकी चीजें जो भी एक्टिविटी आज कोलैबोरेशन में करते हैं, मैं आपसे एक दो चीजें और भी शेयर करना चाहता हूँ, उसकी ऑथेंटिसिटी ऑटोमेटिक होती है, ठीक है। जैसे हम कोई चीज वेरीफाई, मैंने कोई लेक्चर कॉलेज में कराया है तो उसके बहुत से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो भी एक्टिविटी हम इन कोलैबोरेशन विद ईच अदर करते हैं
उसमें वैलिडेशन कराना हमें आसान होता है क्योंकि रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। जब हम 4 लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा होती है। तो यदि मैं भी एक्सपर्ट हूँ तो मैं भी सोचता हूँ हाँ नहीं, ये झूठ नहीं बोल सकते, चारों कॉलेजेस तो मिलके झूठ नहीं बोलेंगे ना। एक कल्ला कॉलेज तो बोल सकता है कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। जब वो अकेला आप कहते हैं कि मैंने ये काम कराया है तो उसकी वैलिडेशन में आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन जब आप कोई भी कोलैबोरेशन में करते हैं, मान लीजिए आपने 2 कॉलेजेस ने मिलके साथ में आपने मैक्स हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन करी हुई है टू डिलीवर द लेक्चर, 3 इंस्टीट्यूशन की कोलैबोरेशन है, तो उसमें झूठ बोलने का कंसेप्ट नहीं, तो उसको वैलिडेट करना बड़ा आसान है। So these are the few points which we must keep in mind in future also। और इस क्राइटेरिया में वो आते हैं। रिसर्च वाले पार्ट में तो वी आर स्टिल वीक, एवरीबॉडी इज वेरी वीक। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उसमें हम 8 या 10 पॉइंट को सरेंडर भी कर सकते हैं। वी विल डिस्कस इट ऑन इट इन लेटर ऑन। फिलहाल आप बाकी पॉइंट्स थोड़ा क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एनी पॉइंट यू वांट टू डिस्कस, यू आर फ्री टू डिस्कस। गुलशन थोड़ा सा थैंक यू एलैबोरेट। सर, थैंक यू सो मच, ओके बहुत अच्छे से बताया। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir, very much for your perfect guidance. Yes, हम कहेंगे for your practical guidance. आपने बहुत अच्छा हमें collaboration वाला point बताया है. Definitely, we will work on this. And now our session is open for the question answer round. Free to ask any query से डील करने वाले लोग हैं या जो हमारे कॉलेज में इस क्राइटेरिया से डील कर रहे हैं, वी आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस टू सर, क्योंकि वही क्वेश्चंस हम आपस में पूछते हैं तो शायद उनका सोल्यूशन नहीं मिलता। यहाँ पे एफडीपी पे आपको उनका सोल्यूशन मिलेगा। सो प्लीज आई इनवाइट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप अपने अपने क्वेश्चंस यहाँ पे रख सकते हैं। नीना मैम, अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो प्लीज। जैसे थैंक यू वर्मी वेरी मच। यस, वर्मी कंपोस्टिंग हम लोग भी यूनिट अपने कॉलेज में स्टार्ट किया हमने, लेकिन हमने इसको एज ए क्या कह सकते सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाया अभी। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करेंगे जैसे एसडी कॉलेज ने किया है, तो शायद हमें एक और पॉइंट मिल जाए। थैंक यू सर। Hello. सर Good morning, everyone. मैं थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में बिकॉज ऑफ द नेट इश्यूज। थोड़ा सा मैंने सुना है डॉक्टर गुलशन को, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एज यूजुअल। इसमें एक चीज मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, इनोवेशन इकोसिस्टम में जैसे वो कहते हैं इंक्यूबेशन सेंटर बनाइए, सेटअप करिए और वहाँ पे सो दैट वी कैन गेट आइडियाज। तो उसका जो मैकेनिज्म है, वो जो आइडियाज आएंगे उनको उनकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। भाई हमने तो बहुत सी राइट। हाँ गुलशन, शुड आई? हेलो हेलो गुलशन। हेलो, यस। हाँ, शुड आई गुलशन? यस सर। ओके 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 जी सर, यू आर ऑडिबल। हाँ ओके ओके। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जो एज फार एज द इकोसिस्टम इज कंसर्न्ड, इकोसिस्टम जो देखिए, एक बच्चा फर्स्ट ईयर में हमारे पास आता है, ओके, तो वी हैव टू क्रिएट ए एनवायरनमेंट। जैसे आपने कहा आइडिया थ्रोन समथिंग लाइक, आपने एक कंपटीशन किया कॉलेज के अंदर ऑन एक्स टॉपिक, ओके, कि आप अपने अपने आइडियाज दें बच्चे, तो वो भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है। आपने बूट कैंप लगाया, दैट इज द फर्स्ट थिंग इज, जब हम स्टार्टअप कराते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों का एक बूट कैंप लगाते हैं, उसके अंदर 600-700 बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं और एक अच्छे पर्सन को बुला के उनको लेक्चर दिलाते हैं मोटिवेशनल, और उन्हां बच्चों को कहते हैं कि यू गिव योर आइडियाज ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। हम 10-15 टॉपिक को फ्लोट कर देते हैं, द चिल्ड्रन गिव देयर आइडिया। तो इसका मतलब वो 700 बच्चों में से
50 बच्चों के कुछ आइडियाज आते हैं, दैट इज अ सेकंड स्टेप। इसका मतलब हमारे पास 50 बच्चे मिल गए हमें जो शायद उस तरफ मूव करना चाहेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन मूव। फिर हम उन बच्चों के एक वर्कशॉप या ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा सकते हैं। और ये जो चाहे हम उसके लिए वर्कशॉप लगाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। आप कोई कंपटीशन कराते हैं उनके आइडियाज लेने के लिए, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंदर यदि आप बच्चों को सिंपल एनएसएस के अंदर एक कैंप लगाते हैं, उनके अंदर बच्चों को लैब के अंदर ये भी सिखाते हैं कि वाटर टेस्टिंग कैसे होती है, इसे मिट्टी की टेस्टिंग कैसे करनी है, सोशलिस्ट टेस्टिंग के किस इक्विपमेंट कैसे यूज करना है, दैट आर आल्सो पार्ट, जैसे वर्मी कंपोस्ट, दैट आर आल्सो पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन ए लार्जर स्केल। आप इंडस्ट्री से 4 लोग बुलाते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनकी वर्कशॉप कराते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आ गया, आपने देखा 10 लड़कियां हैं बहुत अच्छी है, उनको सिलाई सिखा रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। सिलाई सेंटर खोल लिया उन्होंने, घर के अंदर ब्यूटिशियन खोला है, कोई भी काम किया है, दैट इज आल्सो, वो भी तो वो स्टार्टअप ही तो हो गया है। तो आपने उनको मोमबत्तियां बनाने सिखा दिया, अगरबत्तियां बनाने सिखा दिया है, कोई साबुने बनाने सिखा दिया है, केक बनाना सिखा दिया है, फलाना, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। यही चीज तो है स्टार्टअप का। घर बैठे बैठे बच्चों को सिखा दीजिए कि वो अपना केक बनाए घर से। आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे उसको लॉन्च करें, 10 बच्चों की टीम को बना करके हम उसको 10 बच्चों का, ये हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, ये अपने घर से केक बनाते हैं, सारे बच्चे जो भी केक लेना चाहते हैं वहां से ले सकते हैं। तो आपका वो स्टार्टअप स्टार्ट हो गए। दिस इज इकोसिस्टम, हमने डेवलप करना है बस। आई अंडरस्टैंड दैट। हाँ हाँ, जैसे ये मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाले, उनको हमने ये बुलाया था। एमएसएमई वाले की ट्रेनिंग करा दीजिए अपने 2 टीचरों को, उनसे बुला के मीटिंग ला दीजिए, वो आके यहाँ पर बहुत सी हम हाँ कराते हैं, हाँ हर साल ही कराते हैं हम लोग, जैसे एमएसएमई हाँ, वालों से। वो तो सर ठीक है, लेकिन हाँ जी, हाँ, आवाज नहीं आ रही वाले साहब आपकी। हेलो, हेलो, यू आर ऑडिबल सर। वालिया सर की आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ जी वाले सर की बात। मेरी बात नहीं आ रही? हेलो हाँ, नहीं आपका कुछ नहीं हेलो, सुनाई दिया। हाँ जी अब आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। सर आपकी आवाज आ रही है वो पर लोग बीच कह रहे बीच में थे कट रही है। इंक्यूबेशन सेंटर वालिया अगर आप सर बनाना प्लीज चाहते हैं चेक हाँ जी योर कनेक्शन। तो मैं वहाँ पे बता एक रहा हूँ सर, हॉल व्हाट जो इज, है नहीं वो, मैं बताता हूँ व्हाट इज बेसिकली इंक्यूबेशन सर सेंटर। मैं आपको डोंट गो हाँ द जी, प्रोफेशनल वे, जैसे आप कहते हैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी ने बना रखा है, ठीक है। इंक्यूबेशन सेंटर एक बहुत लास्ट स्टेज है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इट वेरी लास्ट स्टेज। पहले आप बच्चे को ट्रेन करेंगे ना। मान लीजिए आपने 3 बच्चे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ट्रेन कर लिया, 15 बच्चे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ट्रेन हो गए, अब उन्होंने एक कंपनी फ्लोट कर दिया है। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, द रोल ऑफ द कॉलेज इज कि आपने एक हॉल दिया, 10 बाई 10 के छोटे छोटे कैबिन बना दिए, और वो कैबिन बच्चों को अलॉट कर दिए, और वो बच्चे वहां पर उनको वाईफाई जो भी है, आपकी लीज लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी है, और बैटरी मतलब बैकअप सिस्टम है, वो फैसिलिटी आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उन बच्चों को प्रोवाइड कर दी है, और वहां से बैठ के वो अपनी कंपनी रन कर रहे हैं। वो बच्चा कम से कम वो बाहर जाके दुकान पे या कोई भी चीज अपना सेटअप नहीं कर सकता, लेकिन आपने कॉलेज के अंदर ही एक इंक्यूबेशन सेंटर डिजाइन कर दिया है। लेकिन वो तभी डिजाइन कर पाओगे यदि बच्चे इस लायक है कि वो वहां से कंपनी रन कर सकते हैं। तो शुरू से वो आइडियाज मंगाओगे उनको, वो मैन्युफैक्चरिंग है या इंप्लीमेंटेशन है, बिल्कुल लास्ट स्टेज है जो इंक्यूबेशन सेंटर की आप बात करते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर बहुत से कॉलेजेस, बहुत सी यूनिवर्सिटी ने खोला है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने पिछले साल भी एक कंपटीशन कराया था जिसमें हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। दे गॉट 50,000 रुपये का उनको एक प्रोजेक्ट मिला था, उन्होंने वो प्रोजेक्ट बना के वहां जमा भी कराया था। तो वो इंक्यूबेशन के अंडर ही उन्होंने वो स्टार्टअप बनाए थे जो बच्चों से, हमारे भी उसमें 2 बच्चे थे हमारे कॉलेज के। तो वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो लास्ट स्टेज है। इसको सबसे पहले हमें इसको, क्योंकि हमारे डिग्री कॉलेज में हमें इसको एनवायरमेंट सेट करना है। तो यदि आपके पास 4 बच्चे मिल गए, सबसे आसान काम जो मैंने आपको बता दिया, द मोस्ट इजिएस्ट वर्क इज कि आप उनको एक हॉल दे दो या स्पेस दे दो, एक लैब दो, छोटा तो डिपेंड करेगा कितने लोग हैं, तो वो बिल्कुल ठीक है। उनको हमने वो बेसिक वो दैट इज इंक्यूबेशन सेंटर। मान लीजिए उनका एम्प्लॉय 3 से 4 हो गए हैं, तो उनको 10 बाई 10 की बड़ा 2 हॉल दे दिए और बड़ा कर दिया। कल को उनके पैसे हो जाएंगे साल बाद, लेकिन उनसे वो चार्ज लेना होता है, उसके ऊपर थोड़ा पैसा लेते हैं, चार्ज करते हैं।
कि हमने उनसे नॉमिनल 1,000 रुपया 2,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से उसका किराया ले लिया, लेकिन वो अपना पूरा कंपनी वाला काम वो अपने को हमारे कॉलेज से ही करेंगे। दैट इज बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर, टेक्निकली स्पीकिंग ये है। दूसरा पार्ट होता है सर, जैसे आपने ट्रेनिंग दी, उस इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर ट्रेनिंग भी पार्ट भी होगा कि आपने किसी बच्चे को साबुन बनानी सिखाई है, ठीक है, ये सारी चीजें शहद बनाना सिखा दिया सारा, फिर वो अपने घर के अंदर लगाता है सारा प्रोजेक्ट, या ब्यूटिशियन का कोर्स करा दिया बच्चों को सारी चीजें, और उस बच्चे ने ब्यूटिशियन का एक स्टार्टअप भी खोला, अपना घर में खोल दिया, वो भी इसी के अंदर काउंट किया जाएगा। जी जी, आई अंडरस्टूड सर, थैंक यू सो मच। ये तो डुएबल चीजें हैं जो हम अपने कॉलेजेस में कर सकते हैं। यही कर रहे हैं सर सारे लोग। आप एक काम करो, सेक्टर 1 पंचकुला चेकअप करके आओ, 3.5 करोड़ रुपया लगाया, मुझे भी वो इंक्यूबेशन सेंटर का दे रहे थे, मैंने रिफ्यूज कर दिया, मैंने कहा वहां के जो प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं उसमें उनका जो पैसा है वो कौन देगा, वहां तो गवर्नमेंट पैसा दे रही है, लेकिन उनके जो स्टार्टअप है वो छोटे छोटे ऐसे ही है, जैसे मैंने आपको बताया ये स्टार्टअप है, मैंने काफी इंक्यूबेशन सेंटर स्टडी किए हैं, वहां गया भी हूँ, सभी के अप्रोक्सीमेटली ऐसे जो मैंने आपको आइडिया दिया ऐसे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। इस क्राइटेरिया को एकदम प्रैक्टिकल हेलो विभा मैम, विभा मैम हैंडल करने के लिए थैंक यू वेरी मच सर। विभा मैम, देयर इज वन क्वेश्चन। Yes, Nina ma'am, please. विभा मैम, Nina ma'am. Yes, ma'am. There is one question. Please ask, ma'am. There is one question. विभा मैम, myself Yes, ma'am. You are audible. दीपिका बोल रही हूँ मैं, कि क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, लॉजिकल साइंसेस स्पेशली द बॉट। Yes, Deepika ma'am. हाँ जी, अभी सर बता रहे थे इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में। सर आप ये इंक्यूबेशन प्लांट सेक्शन में हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं? कैन वी हेल्प द बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स? Definitely, madam. It is Deepika ma'am. can be very helpful if you develop one nursery. That will be also a type of incubation center. हेलो, हाँ जी विभा मैम। Because plant breeding is Voice not a बहुत very break हो रही है. simple process. I think there is one network issue. Hello. Hello, yes sir, you are audible. I think that we should get the question in the chat box rather than by voice. हाँ गुलचंद, चैट बॉक्स में लिखा लो, थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम, जीनत को कहो कि वो थोड़ा सा अपना स्टार्ट कर दे, फिर चैट बॉक्स में क्वेश्चन एंड देन ले लेंगे, ठीक है? राइट। So I will now stop sharing my screen. So now, लेकिन जो क्वेश्चन मैम ने पूछा, मैं जो थोड़ा सा मैं उसको समझ पाया कि बेसिकली शी वाज आस्किंग फॉर द बायोलॉजी टीचर्स, biology student, what the biology student can do in this particular question of incubation center. So she was asking about the plant breeding. So that is also one very important, interesting area. I must say that it is one interesting area that students can develop the nursery, and they must be trained to develop a nursery, because plant breeding is a very significant area in terms of nursery, because we have different variety of exotic plants. If you are able to grow those exotic plant in your nursery, that will be a very good startup. So
it is one area of focus that the medical students, especially botany and zoology student, can look on. Thank you very much, sir. My heartfelt thanks to Dr. Gulshan, Assistant Professor in Chemistry from SD College Ambala. Thank you very much, sir, for your enriching presentation. Definitely, it was a wonderful presentation. Thank you, ma'am. Thank you very much. और साथ में सर ने जो और अपने आइडियाज दिए अबाउट कोलैबोरेशन, अबाउट द इंक्यूबेशन, अबाउट द क्रिएटिंग दैट एटमॉस्फेयर फॉर आवर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली हम उनमें से कुछ आइडियाज जो हम जल्दी से जल्दी अपने कॉलेज में यूज कर पाएंगे, हम यूज करेंगे. थैंक यू सर फॉर योर प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन, जिससे हम चीजें डिराइव करके अपने क्राइटेरिया को और इनरिच बनाएंगे. थैंक यू सर. और आई होप सो कि सारे टीचर्स जो अलग अलग क्राइटेरिया में इन्वॉल्व हैं कॉलेज के, वो भी इस प्रेजेंटेशन से उनको भी बहुत बेनिफिट मिला होगा. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you, ma'am. And now Dr. for our next session, thank you sir. And now for our next session, extension, the part of criteria 3, we have our resource person, Ms. Jeenat Madan, Assistant Professor in Zoology. Ma'am, I welcome you on behalf of GNG College and GN Khalsa College, Yamunanagar. Ma'am, this is my humble request to you. Please give your talk on innovation. Ma'am, I welcome you. Please unmute yourself. Thank you, ma'am. Thank you, Viva ma'am. Am I audible? Kindly confirm. Yes, ma'am, you are audible. Yes, ma'am, you are audible. Okay. Yes, ma'am, you are audible. Thank you so much. Thank you, ma'am. A very good afternoon to everyone. First of all, I would like to thank management and principal of GNG College and GN Khalsa College Yamunanagar. At the same time, I would like to extend my thanks to our worthy principal, Dr. Rajinder Singh, who has given me the opportunity to interact with you all. So today is the day we have been discussing about criterion 3 of NAG. Much have been told to you by Dr. Gulshan, and it was a really interactive session. You have asked a number of questions. So I'll be discussing the remaining 2 key indicators, that are extension activities and collaboration, which are 3.4 and 3.5 respectively. Give me a minute, let me share my screen. Viva, kindly confirm me, is my screen visible? Yes, ma'am, your screen is visible. Okay, thank you so much. So we have been talking about criterion 3, that is research, innovation, and extension. The key indicators: resource mobilization for research, innovation ecosystem, and research publication and awards have all been already told to you by Dr. Gulshan. I'll be dealing with extension activities and collaborations. Although these two form a very small part to discuss, yet they fetch a lot of marks, that is 70 marks of this criteria. And these two are very important key indicators of criterion 3. So let's have a look on the matrices of 3.4. So it has 4 matrices: 3.4.1, 2, 3, and 4. One is qualitative metrics and other 3 are quantitative metrics. So as you can read out from the screen, there are 4 matrices. Let me read out first. First is 3.4.1, that is extension activities carried out in the neighborhood community, sensitizing students to social issues for their holistic or overall development and impact thereof during the last 5 years. So this particular point, it has 5 points, 5 marks. Then next is 3.4.2, number of awards and recognitions received for extension activities from government or recognized bodies during the last 5 years. It is of 10 marks. Then 3.4.3, again quantitative metrics, number of extension and outreach programs conducted by the institution through NSS, NCC, Red Cross, YRC, etc., which have a number of programs such as Swachh Bharat, AIDS awareness, gender issues, and you all are aware of these different programs, or those organized in collaboration with industry, community, and NGOs during the last 5 years. So this fetches 15 marks. Then is 3.4.4,
Maximum marks of this 3.4, it is by earned by 3.4.4, which is average percentage of students participating in extension activities at 3.4.3 above during last 5 years. So this particular point, it has 20 marks. Before going in detail about these extension activities, let us talk something about extension and outreach programs. So in the NAC, the well-defined definitions of extension and outreach activities is given, which is extension activities, you can define it as the aspect of education which emphasizes neighborhood services, and outreach is the practice of conducting local public awareness activities through targeted community interaction. So if we talk about extension, actually both of these, if we have a look on them, both of these are the part of extension area, and extension is actually the third dimension of education, the two being teaching and research. So research, you have teaching, we have talked earlier, research we have talked earlier. So this is the third dimension of education, that is extension. And the main concept is from lab to land. So you have to, for quality enhancement of any institution, you have to embrace this concept of lab to land. For example, you have done research, you have an innovation, आपने कोई research की lab में, आपने कुछ innovate किया, कुछ innovation किया, but what is the use of that innovation अगर आपने उसको social service में नहीं use किया? If it is of no use to community, if it is of no use to society. So this is basically the concept of these extension activities. Let me tell you one more difference. The main difference between these extension and outreach, and a very simple difference which I can make you understand about these, is extension activity when the students are benefited, that is extension activity. Any activity in which your students are benefited, although the community is benefited at the same time, but the main benefit is earned by your students, that is extension activity. And outreach activities, it is a community benefited activity. That means activity is carried out by your students, but the maximum benefit is to the community. आप community को benefit कर रहे हैं. So इसे आप extension और outreach को differentiate कर सकते हैं, because this is a question of very importance कि extension activity में हम कौन सी activities डालें और outreach activities में कौन सी activities डालें. तो let us differentiate according to this concept, that in which your students are benefited, that is extension activity, in which the community is benefited at a large, it is outreach activity. So let me illustrate with a very simple example. I'm an SS program officer here, and I'm a teacher of zoology. I teach zoology subject. So I have done a lot of work on vermicompost also in my college. So I'll give an example of waste management. मान लीजिए मैंने अपने students को एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, और या मैं उनको किसी वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पर लेकर गई और उनका मैंने एक ट्रेनिंग करवाया, वहां पर ट्रेनिंग की उन्होंने, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एक्सटेंशन एक्टिविटी, बिकॉज इन दैट केस द स्टूडेंट्स आर बेनिफिटेड. और इन्हीं स्टूडेंट्स के ग्रुप को मैं रूरल एरिया में लेकर गई, वहां पर इन्होंने लोकल रेजिडेंट्स को सेंसिटाइज किया, उनको अवेयर किया, वहां पर वेस्ट मैनेजमेंट का सर्वे किया, इंस्टॉलेशन ऑफ डस्टबिन, कलर कोडेड डस्टबिन किए वहां पर, या उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट एक सेटअप किया. सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज आउटरीच एक्टिविटी. So this is a very simple example how you can differentiate between extension and outreach activity. So by organizing workshops for your students, by giving them training, by taking them to some plants or some labs, so that they can learn something, that is extension activity. And when these aspects are ये जो उनका जितना भी काम है extension activities का, they are applied to community and the community is benefited, that are outreach activities. So this is the basic difference between extension and outreach activities. What are actually extension and outreach activities में हमको करना क्या है और हम क्या उसका benefit क्या होता है? So it is not only just to fetch the grade of for the NAC. आपको grade तो मिलेगा ही मिलेगा अगर आप ये काम करेंगे. आप स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं उनकी कम्युनिटी के लिए, आप उनको कैंपस से बाहर लेकर जा रहे हैं, आप उनको क्लासरूम टीचिंग से हैंड टीचिंग जो है वो दे रहे हैं.
So you are applying the concept of 3H to them. Like they are doing work with their head, their heart, and their hand, so that the 4th H can be achieved, that is social health, environmental health. तो इस तरह से हम उनको sensitize कर रहे हैं. And when they go outside in the community, they identify the problems of the community, they identify the problems of the society, so they become sensitized towards their society and they work for their society, they contribute towards the community development. So we achieve 2 core values of NAC, which are sensitizing the students towards these things, these social issues. And the second core value is national development. So when they give their contribution towards community development, ultimately that would become the national development and global development. So not only with these activities, we are fetching marks or earning marks for our NAC, we are also enhancing the education, quality of education. We are enhancing, we are inculcating the sensitivity in our students. We are helping the community. So then in these activities, when you do these extension and outreach activity, you have to count the impact of that activity. मान लीजिए मैंने जाकर किसी गांव में वेस्ट मैनेजमेंट का एक सर्वे किया, बट मैंने उस वेस्ट मैनेजमेंट के सर्वे में मेरा आउटकम क्या निकला? मैंने तो सर्वे किया, वो क्वेश्चनएयर भरवाया और फिर उसे रख लिया. होना क्या चाहिए कि आपने वो सर्वे किया, आपने उसको एनालाइज किया एंड यू फाइंड आउट द लेकुना, कि उसमें क्या लेकुना था, उस गांव में क्या लेकुना रहा, और फिर आपने उसको ओवरकम किया. वहां पे कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की, वहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज की ताकि वो ओवरकम हुआ, एंड देन यू अगेन सर्वे दैट, और फिर आपको पता चलता है कि आपकी उन एक्टिविटीज का ये आउटकम निकला, एंड दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ एक्टिविटी, दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. और यही हमारे एक मैट्रिक्स में हमें लिखना है कि आपने जो एक्टिविटीज करवाई हैं उनका इम्पैक्ट क्या है. जब आप ये बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं और बहुत अच्छी तरह से करते हैं, सो दिस कैन बी वन ऑफ योर बेस्ट प्रैक्टिस. तो जो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस अपने इंस्टीट्यूशन की लिखते हैं, तो उनमें कोई ना कोई एक एक्टिविटी आप इसमें से भी ये आपकी बेस्ट प्रैक्टिस बन सकती है. सो एक्सटेंशन एंड आउटरीच एक्टिविटीज, दीज आर सम एग्जांपल्स. बहुत सारा काम आपके कॉलेजेस में भी एनसीसी और एनएसएस करता है. वाटर कंजर्वेशन एक ऐसा एरिया है, हेल्थ एंड हाइजीन एक ऐसा एरिया है, विलेज अडॉप्शन, नो डाउट you must have adopted the villages because उन्नत भारत अभियान एक ऐसा स्कीम है जिसमें आपने villages adopt किए. सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, एनवायरमेंट कंजर्वेशन एंड अवेयरनेस. तो ये कुछ इस तरह के काम हैं जो आप एक्सटेंशन एंड आउटरीच एक्टिविटीज में कर सकते हैं. एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको और देती हूँ कि कोविड टाइम्स में आपने स्टूडेंट्स को सैनिटाइजर्स एंड मास्क बनाने सिखाए, दैट इज एक्सटेंशन एक्टिविटी. और आपने सैनिटाइजर्स और मास्क स्टूडेंट्स ने बाहर जाके बांटे, दैट इज आउटरीच एक्टिविटी. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड आउटरीच एक्टिविटी. Now let us describe this, let me describe all these matrices in detail. So this is 3.4.1, which is extension activities carried out in the neighborhood community, sensitizing students to social issues for their holistic development and impact thereof during the last 5 years. So यहाँ impact को मैं थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि इम्पैक्ट जो है वो आपको इसमें देना है कि आप यू हैव टू डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटेंशन एक्टिविटीज जो आपने की है विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 500 वर्ड्स. तो इसके लिए आप लिंक भी दे सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन. सो यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग दीज एक्टिविटीज कि मैं अगर ये एक्टिविटी प्लान कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, that you have to count. So it is of 5 marks. Then is 3.4.2, that is quantitative metrics, number of awards and recognitions received for extension activities from government recognized bodies during the last 5 years. This is very important क्योंकि अगर आप कोई काम करते हैं तो नो डाउट आपको अवार्ड्स मिलते हैं, रिकॉग्निशंस मिलते हैं. तो वही काम जो आपने एक्सटेंशन एक्टिविटीज की हैं, उन्हीं कामों के लिए आपको क्या अवार्ड और क्या रिकॉग्निशन मिला वो आपको इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में देना है. सो आपको डेटा रिक्वायरमेंट जो है वो क्या क्या है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए. नेम ऑफ द एक्टिविटी आपको लिखना है, नेम ऑफ द अवार्ड आपको लिखना है, नेम ऑफ अवार्डिंग गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज एंड ईयर ऑफ द अवार्ड. और आप कुछ और डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो आप कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो अपलोड कर सकते हैं. इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि ई कॉपी ऑफ अवार्ड लेटर्स जो है वो आपको
रखनी है और वो आपको अपलोड करनी है. E-copy of award letters is must. So this is of 10 marks. किस तरह के अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस जो हैं वो काउंट हो सकते हैं? बेस्ट एनएसएस यूनिट अवार्ड, अगर आपको स्टेट पर कोई बेस्ट एनएसएस यूनिट अवार्ड मिला है. बेस्ट एनसीसी यूनिट, वनश्री पुरस्कार, अवार्ड बाय एनी एनजीओज, स्वच्छ भारत पुरस्कार अगर आपको मिला है, आपको कॉलेज को स्वच्छ कॉलेज पुरस्कार मिला है, तो इस तरह के कुछ अवार्ड्स जो हैं और रिकॉग्निशंस जो हैं वो आपको इसमें फिल करने हैं, इसका रिकॉर्ड रखना है. One thing you have to keep in mind that awards to the institution and not to the individual is considered. तो आपके जो award institution को मिल रहा है सिर्फ उसका recognition है. For example, if the award is to Zinat Madan for this particular activity, वो यहाँ पे consider नहीं होगा. Awarded to Sanatan Dharma College Ambala Kent for this particular activity, it would be considered under this. Awards local in nature, such as urban, local bodies, panchayat, they are to be avoided in this. Then is 3.4.3, it is of 15 marks. Number of extension and outreach programs conducted by institution through NSS, NCC, Red Cross, YRC, etc. जिसमें आप कौन सा काम करते हैं? स्वच्छ भारत का है, एड्स अवेयरनेस का है, जेंडर इश्यूज का है. तो इस तरह के काम जो हैं वो आपने उनका नंबर इसमें डेटा फिल करना है. एंड दोज ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद एनी इंडस्ट्री, कम्युनिटी एंड एनजीओज. अभी जैसे प्रिंसिपल सर ने भी आपको बताया कि कोलैबोरेशन जो है वो बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप किसी एनजीओ के साथ या किसी एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करके कोई काम करते हैं तो दैट गिव ऑथेंटिकेशन टू योर डेटा कि आपने ये काम किया है, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वैलिडेशन या वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. सो दीज आर डेटा रिक्वायरमेंट. जो डेटा टेम्पलेट है उसमें आपको फिल क्या करना है? नेम एंड नंबर ऑफ एक्सटेंशन एंड आउटरीच प्रोग्राम्स एक कॉलम है. नेम ऑफ कोलैबोरेटिंग एजेंसी कौन सी है, वो नॉन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कम्युनिटी, कौन सी एजेंसी है, तो वो आपको इसमें फिल करना है. इसका एक बहुत सिंपल तरीका जो है हमेशा क्या रहता है कि आप अपनी एक्टिविटी जब भी प्लान करते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखने हैं, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन इज असेंशियल पार्ट ऑफ दिस. सो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि एक फोल्डर बना सकते हैं, उसमें आप अपनी जो भी नोटिस है, आपने जो एक्टिविटी की है उसको लिखें. उसके बाद आपने जो बच्चों को एनरोल किया है, रजिस्टर किया है, आप उसका डिटेल रखें. आपने जो एक्टिविटी की है उसकी फोटोग्राफ्स रखें. उसके बाद विद जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स आर कंपल्सरी. तो आपको क्या करना है कि हमेशा जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स लेनी है, तो जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स रखें. उसके बाद आप एक डिटेल रिपोर्ट लिखें जिसमें इंचार्ज और प्रिंसिपल के साइन हो. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो वो जो अटेंडेंस जो है वो आपके पास रहेगी, और न्यूज़पेपर क्लिप्स. तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप संभाल के रखते हैं तो बिलीव मी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है ये जितना भी डेटा आपको फिल करना है. This is 3.4.4, very important metrics of this 3.4. It is 20 marks. Average percentage of students participating in extension activities at 3.4.3 above during last 5 years. So जितनी भी एक्टिविटीज अभी हमने 3.4.3 में कहा, स्वच्छ भारत है, एड्स अवेयरनेस है, जेंडर इश्यूज है, ये कुछ हैं. इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं जो आपने कोलैबोरेशन में की है और नहीं भी की है कोलैबोरेशन में. परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आपको बताना है इसमें. सो इसमें डेटा रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं क्या है. नेम ऑफ द एक्टिविटी, नेम ऑफ द स्कीम, ईयर ऑफ द एक्टिविटी, number of teachers participating, number of students participating. For example, I organized a cleanliness drive in a particular village, so that will be considered as outreach activity, and I collaborated with some NGO for this activity, so that would be the collaboration. Name of the scheme, मान लीजिए स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप प्रोग्राम वो एक स्कीम है, that would be the name of the scheme. Year of the activity, we are 3 NSS program officers, so number of teachers are 3 and number of students are 100. So अब मैं क्या है कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें सिर्फ एनएसएस के स्टूडेंट्स फिल करती रहूं, 100, 200 बस. तो परसेंटेज है वो आपको कैसे निकालनी है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज. So this is very important point, that it is not the responsibility or duty of NSS, YRC and NCC or different clubs of the college to participate in these extension and outreach programs
Each and every department of the college must organize these type of activities so that the percentage can go higher. For example, if the number of students participating in these activities is 500 and the total strength is 2000, so it is very negligible percentage जो आप यहाँ पर fill करेंगे, and you won't be able to fetch marks in this. But when you involve the whole college and different departments of the college in these type of activities, so that each and every department on its own organize such extension activities or training programs or outreach activities for the students or community, तो क्या होगा कि मान लीजिए आपने 2000 बच्चे हैं और 1500 बच्चों को इनमें इन्वॉल्व कर लिया, तो आप देखिए you are able to fetch good marks in this particular metrics. So this is the main point, that you have to involve the whole college and maximum number of students in the extension and outreach activities. So this is again calculated, this formula for percentage calculation, like total number of students participating in such activities divided by number of students into 100, and again summation of percentage per year divided by 5. So it would give you the percentage of students participating in extension activities during last 5 years. So file description, you can give the report of the event, any additional information you can upload. So this is about 3.4.4. So extension and outreach activities are very important part of any institution. Then coming to 3.5, which is collaboration. बहुत बात की हमने कि collaboration करना चाहिए, collaboration NGO के साथ करना चाहिए, आपको industry के साथ करना चाहिए. So this is 3.5 and it fetches 20 marks for this. It has two matrices, 3.5.1, 3.5.2, both being quantitative matrices. So first is the institution has several collaborations, linkages for faculty exchange, student exchange, internship, field trip, on-the-job training, research, etc. during the last 5 years, 10 marks. 3.5.2, number of functional MOUs with national and international institutions, universities, industries, corporate houses, etc. during the last 5 years, 10 marks. Again, going into detail of these two matrices, let us have a look on linkage and collaboration, that what is linkage and what is collaboration. So पहले बात करते हैं collaboration की. सर ने आपको पहले बताया है कि the situation of two or more people or organization working together to create or achieve the same thing, that would be the mutual benefit. अभी सर ने बोला कि आप एक लेक्चर करवाते हैं हेल्थ इश्यूज पे फॉर एग्जांपल, और या आपने कोई कोर्स स्टार्ट किया हेल्थ इश्यूज पे, इट कैन बी ऑफ वन कॉलेज एंड इफ यू कोलैबोरेट इट कैन बी ऑफ 3 colleges. So this is a collaboration, that you collaboratively work to achieve one thing, to achieve same thing, and it is of mutual benefit. Then is linkage. Linkage is actually formal agreement between 2 or more institutions, organizations, which may not have legal binding. And the linkage can be for resource sharing, for internship, on-the-job training, project work, and sharing some facilities. Again, let me illustrate with one example which I quoted earlier of waste management. उसी को मैं इसमें अगर कहूँ linkage और collaboration में, if I take my students or my students वो कोई training करते हैं, they take some training, they get some training from some lab about waste management or soil treatment or soil testing, that would be linkage. वो मैंने हमारे कॉलेज ने उस लैब के साथ एक लिंकेज किया है, ठीक है, वो ट्रेनिंग लेने गए हैं. और यही जो सॉइल टेस्टिंग का कंसेप्ट है या वेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट है या जो उन्होंने वहां पे ट्रेनिंग में सीखा, वो मैंने किसी एनजीओ के साथ कोलैबोरेट किया या मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट किया कि ओके वी विल डू दिस टाइप ऑफ वर्क इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ अंबाला, तो वो हमारी हो जाती है कोलैबोरेशन. कि हमारा कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों कोलैबोरेशन में एक प्लास्टिक फ्री कैंपेन चला रहे हैं या एक सॉइल टेस्टिंग कैंपेन चला रहे हैं या वेस्ट मैनेजमेंट कैंपेन चला रहे हैं, बिकॉज उसमें आप एक ही चीज को अचीव करने के लिए
एजेंसीज जो हैं या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काम कर रही हैं. सो दैट इज कोलैबोरेशन. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिंकेज एंड कोलैबोरेशन. लिंकेज आप फील्ड ट्रिप है वो एकेडमिक लिंकेज में काउंट होती है. स्टडी विजिट्स हैं, आपने गेस्ट लेक्चर्स करवाए हैं. मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन से आपने रिसोर्स पर्सन्स बुलाए और फिर उनके गेस्ट लेक्चर कराए और आपने उनके साथ एक लिंकेज किया क्योंकि हमारे इस टॉपिक पर आपके ये जो पर्सन्स हैं वो आकर लेक्चर्स देंगे. तो दैट वुड बी अ लिंकेज. ट्रेनिंग भी हो सकती है लिंकेज ट्रेनिंग. उसमें क्या है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो भी हमने बात की. रिसर्च लिंकेजेस भी हो सकती हैं जिसमें आप शेयरिंग फैसिलिटी, गाइडेंस ऑन रिसर्च एंड एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं. सो दिस इज अबाउट लिंकेज फॉर इंटर्नशिप एंड रिसर्च. नाउ taking this 3.5.1, so this says that number of collaborative activities for research, faculty exchange, student exchange, internship year wise during the last 5 years. डेटा रिक्वायरमेंट, आपको डेटा टेम्पलेट जो है उसमें क्या फिल करना है. टाइटल ऑफ द कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, नेम ऑफ द पार्टनरिंग इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री और रिसर्च लैब, ईयर ऑफ कमेंसमेंट, आपने वो कब स्टार्ट किया, ड्यूरेशन, फ्रॉम टू, and nature of that collaborative activity, whether it is academic or it is research or some other. File description, you must have e-copies of related document. Any additional information, you can make it and upload it. And details of collaborative activities with institutions, industries for research, faculty exchange, student exchange, and internship. Then is 3.5.2. We talked about MOUs, Memorandum of Understanding. So if I read it out, it says that number of functional MOUs, here I emphasize on functional. Number of functional MOUs with institutions of national, international importance, other universities, industries, corporate houses, etc., year-wise during the last 5 years. So आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी इंडस्ट्री के साथ अगर आप लिंकेज कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो यू हैव टू साइन MOU. सो डेटा रिक्वायरमेंट क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन विद विच MOU इज साइंड, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट हाउस, ईयर ऑफ साइनिंग MOU, आपने कितने टाइम के लिए वो किया है, दैट इज ड्यूरेशन. List the actual activities under each MOU. This is very important. Number of students or teachers participating under MOUs. So here I emphasized on functional MOU. Functional MOU is that for example, I being an NSS officer, I signed MOU with some NGO. And after that, it is on paper and it is dead. I did nothing. I did no activity. That is not a functional MOU. So you have to carry out activities with that particular institution or organization with which you have signed MOUs during your assessment period. So आपका MOU जो है वो functional होना चाहिए, उसमें activities जो है वो होनी चाहिए, तभी वो functional कहलाएगा. Just signing on a piece of paper, it would not be considered. So e-copy of letters showing MOUs with other institutions should be there. MOU should be on bond paper. List of activities conducted under which MOU along with dates of starting and completion year-wise signed by both parties. So you can make a format of this MOU. आप अपना एक फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं और फिर आप उनके साथ ये जो है इस तरह का MOU साइन कर सकते हैं. Like we have signed a number of MOUs. तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको उसको फंक्शनल बनाकर रखना है, आपको उसके साथ काम करना है. At least one activity to be conducted per MOU during the assessment period. And one thing is very important, like MOUs with the sister institutions under the same trust not to be included. So it should not be included under this, like we are under Sanatan Dharma Society. So if I am signing an MOU with SD Vidya or some other institution under this trust, same trust or same society, that would not be considered. So these are different points. And let me tell you that collaboration is at now at times it is very easy due to leveraging technology. There is a leverage technology and you can sign MOU with any organization, institution, and you can work better. So it is collaboration, coexist and conquer. So this is about
collaboration part. So conclusion is that if you work aggressively on these two categories, on these two key indicators, then you can find a scope for present best practice or distinctiveness in SSR. Presentation of data is most important thing. Refer manual and SOP, which is updated time to time. Be sure on what is asked and what we are submitting. This is very important. So this is all from my side about 3.4 and 3.5. I hope I have made you understand this part, and all the very best and achieve the endeavors. Thank you so much. Jeanat ma'am, thank you very much for this wonderful presentation. Your suggestions are really valuable. All the participants of this Vibha ma'am? FDP is going to use this practical knowledge for criteria. Yes, ma'am. Yes, Deepika ma'am. Vibha ma'am? Nina ma'am, would you like to ask something? Yes, Deepika ma'am. Hello? Yes, Vibha ma'am, ma'am, you are audible. Zinat, I want to ask one. ओके ओके जीनत, तूने कोलैबोरेशंस के बारे में बताया, तो जो स्वच्छ भारत अभियान और उन्नत भारत अभियान है, कैन वी कंसीडर दीज एज अ कोलैबोरेशन? No, the schemes which are given to you by government or state, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आती हैं, आपको तो उनके साथ पैरेलल काम करना है। MHRD's प्रोग्राम है, बट आप उसके साथ उनकी कोलैबोरेशन नहीं शो कर सकते, क्योंकि वो आपको मिला है और आप उनके पैरेलल वो काम कर रहे हैं। बट उसके अंडर जो एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, आप उन एक्टिविटीज के लिए किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। मान लीजिए उन्नत भारत अभियान में मैं ओपन डिफिकेशन फ्री एक विलेज बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं किसी एक पर्टिकुलर एनजीओ के साथ या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर कोलैबोरेशन करती हूँ, तो उसे मैं अचीव कर सकती हूँ। बट यू कांट कंसिडर इट एज कोलैबोरेशन विद MHRD। हेलो, थैंक यू जीनत मैम। जीनत मैम, मेरा भी क्वेश्चन है कि जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज होती हैं, हमें मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए क्या कोई मिनिमम नंबर है कि हमें इतनी एक्सटेंशन एक्टिविटीज करनी है मैम, या इतने आउटरीच प्रोग्राम्स हमें करने ही करने चाहिए? मैम, ऐसा कोई वेल डिफाइंड नंबर नहीं है कि आपने इतनी एक्टिविटीज करनी है। मान लीजिए आप कहते हैं कि आपने 5 एक्टिविटीज करनी है या 6 एक्टिविटीज करनी है, ऐसा कोई नहीं है। वो स्केल एक है कि कितने स्केल पर वो जो है उसको रीड करते हैं, लाइक वो जो नेट या टीम आती है वो किस तरह से उसे करते हैं। बट यहाँ कोई वेल डिफाइंड ऐसा नंबर नहीं है कि आप 20 एक्टिविटीज करेंगे तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे। तो क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। यस सर। हेलो, नो नो, हाँ जी सर, हाँ नो नो, हेलो, यस सर। हाँ, yes, let me Yes, explain. sir. For every question there is different benchmarks which are not disclosed. So for example, you are asked number of activities, then the benchmark will be a number. These are key performing indicators, KPI कहते हैं इसे। एक डिजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन ए ईयर यू आर डूइंग 25 एक्टिविटीज, ओके, आपने उसे वैलिडेट किया है। अब उसका एक इंडिकेटर होगा एवरेज 5 साल का। तो यदि आपकी एवरेज 25 आ रही है, अब वहां पर बेंचमार्क्स होंगे। द बेंचमार्क्स इज लाइक दिस, यू विल गेट 4 out of 4 marks if it is greater than 28. For example, average, I'm just giving an example. These benchmarks are not known to anyone. So यदि आपके 28 या 28 से ज्यादा number of activities per year है, तो you will get 4 out of 4. If it is between 20 to 28, you will get 3 marks. If it is between 15 से 20, you will get 2 marks. Similarly, 10 से 15 है 1 marks. Or if it is less than 10, you will get 0 marks. So for every question, you have a benchmark. We call it a KPI, key performing indicators and benchmarks. तो वो बहुत ही जरूरी है।
तो these things are not known to anyone. So कितनी करनी है ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है. You can do hundreds, 200s, whatever it may be, but it will be the average of the last 5 years. Similarly, what percentage of students are participating in the outreach activity? What percentage? It's a percentage. Say you verify everything. DVV होने के बाद आपकी percentage आएगी. Say it comes out to 43.5. तो वहां पर भी उस क्वेश्चन का एक बेंचमार्क्स होंगे. वो बेंचमार्क्स होंगे, लेट अस सपोज more than 56%, yes, 55%, more than equal to, you will get 4 marks. If it is between 45 and 55, you will get 3 marks. Between 35 to 40, 45, 2 marks. 30 to 35, you'll get 1 marks. Or something like less than 30 marks, 30 something, so you will get 0 marks. It's like this. So these are the benchmarks. ये number होगा और ये बहुत मैंडेटरी है हर क्वेश्चन के अंदर. Anything else? Is it clear? Yes, sir. It's clear. Thank you. Any other query? थैंक यू सो मच जीनत मैम, बहुत सुंदर बोला, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया, इलेबोरेट एग्जांपल्स के साथ. बेंचमार्क. हेलो सर. हेलो विभा मैम. Yes, Deepika ma'am, you are audible. Please ask your question. Ma'am, a very layman question to Rana sir. Sir, where are these benchmarks are given? Very layman, and sorry to ask this question, but it is very stupid question. I knew that. I just want to clear my doubt. Benchmarks are not known to anyone. ये नेक डिसाइड करते हैं. They are dynamic in nature. They may change with time. उन्हें लगता है कि इस बार सारे कॉलेजेस ने इस क्वेश्चन के अंदर they are getting full marks, तो बेंचमार्क बढ़ा सकते हैं अगली बार. So benchmarks are not known to anyone. Okay sir. हाँ, कुछ क्वेश्चनों के तो दे ही रखे हैं उन्होंने, 2-4 क्वेश्चनों के, लेकिन हर एक क्वेश्चन के बेंचमार्क्स नहीं होते. वो उनको हिडन है, किसी को भी नहीं मालूम होता. Nobody knows it. सिर्फ जो टीम जानती है वो उसको सीक्रेट रखना मैंडेटरी है. लेकिन हम आपको थोड़ा आइडिया दे देंगे. Thank you. Yes, that is what I want to get now. Thank you, sir. That is what I am अभी asking. नहीं, अभी पहले आप वो रख लीजिए, उसके बाद देखेंगे. ठीक है ना? Okay, thank you sir. Thank you. अभी काम कर लीजिए, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है. Thank you, sir. सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि हाँ जी. सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि ऐसा मैंने सुना है, इट कैन बी रॉन्ग, इट कैन बी राइट, कि नैप में एक्सटेंशन एक्टिविटीज के नंबर कम मिलते हैं और अगर हम हाफ सेमिनार करवाएं उसके मार्क्स मिलते हैं. ऐसा भी कुछ है सर? दोबारा बताया क्या? एक्सटेंशन एक्टिविटी जैसे हम एक्सटेंशन लेक्चर्स करवाते हैं अपने डिपार्टमेंट. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं. एक्सटेंशन ऐसा इट इज, देयर इज नथिंग लाइक दिस. देखिए, वैलिडेशन कराना है. आप क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें, समझें, और देन यू डू द वैलिडेशन. यदि आप वैलिडेट नहीं कराएंगे फिर कुछ नहीं होने वाला. अब आप कहते हो जी मैंने तो वहां पर गाँव गए थे जी, 15 बच्चे गए, शो कर दो 50, आप 50 वेरीफाई ना करा पाओ, फंस जाओगे. वैलिडेट कराना सबसे मुश्किल काम होता है एक्सटेंशन एक्टिविटी, बिकॉज द लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट एक्टिविटी. हाँ, आप रोज ही करते हो, डेली आपने आपके अखबार में कटिंग है, अखबार में लिखा हुआ 112 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो वैलिडेट हो गया. और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? ठीक है कि नहीं? अब आपने 112 बच्चों की लिस्टें देनी है, सारा कुछ साइन करना है, वो जियो टैग फोटोग्राफ देने हैं, दैट्स ऑल. वो स्टैंडर्डाइज्ड है. लेकिन वैलिडेशन इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि नंबर ज्यादा है, एक्टिविटी ज्यादा है, तो वैलिडेशन की दिक्कत होती है. वहां पर बस ये है थोड़ी सी. तो हमेशा ही ये ध्यान रखना है कि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज होती है, इनको न्यूज़पेपर में छापेंगे तो बहुत अच्छा होगा. वो बेस्ट वैलिडेशन होती है. ठीक है? थैंक यू सर. थैंक यू सर. Any other questions from the side of the participants? Jeenat ma'am is with us. Definitely it's a good time for us कि जो भी हमारी क्वेरीज हैं वो हम जीनत मैम से, सर से पूछ के उनका कुछ सोल्यूशन हमें मिल सकता है.
Good afternoon. Jeanette ma'am, I want to appreciate you. You have described very well all the points. And whenever we'll have any query, I hope that you'll be with us. And we'll Sure, ma'am. certainly ask you again. Sure, Thank you. ma'am. Sure. ठीक है जिन जैसे खत्म होगा मीटिंग के लिए आ जाना नीचे. ओके बाय. आई एम लीविंग द मीटिंग. Okay, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. So I hope जीनत मैम आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन साथ में अपने पर्सनल एग्जांपल्स के साथ में दिया कि बहुत सारी हमारी क्वेरी सॉल्व हो गई. और जैसा अभी मैम ने कहा है कि जब हम काम करेंगे अगर हमें और कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है तो डेफिनेटली वी विल कम टू यू. Yes, sure. You are always welcome. Most welcome. Thank you, ma'am. So my heartfelt thanks to Jinat ma'am, Gulshan sir, and the principal sir of SD College Ambala sir. Thank you sir कि आपके valuable practical suggestions हमें मिले जिससे कि criteria 3 is now really very easy for us to work. अगर जहाँ पे भी एस एन IQAC मेंबर हमें प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली हम आपके साथ कोलैबोरेशन में आपको देखेंगे कि आप हमारी इसमें हेल्प करें. थैंक यू मैम. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. So now we can leave the meeting. Thank you very much, all the participants. मैसेज आवाज कट रही थी. मैंने बोला फोन करो, मैंने फोन किया.